Hello guys, welcome back to the Nifty City channel. Thank you so much for staying with us, for following us. कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं. So thank you so much guys. So as usual, every Sunday हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एक एनालिसिस करते हैं. So इस बार हम क्या करने वाले हैं? निफ्टी, बैंक निफ्टी और एक बहुत ही अच्छा एक इंडेक्स का एनालिसिस हम करने वाले हैं. Okay, apart from Nifty and Bank Nifty, which we believe can lead the recovery in the market. Okay, तो before we dive in, जैसे कि आपको पता है एवरी संडे वी डू अ वीडियो. लास्ट संडे हमने डिस्कस किया था निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर एंड समवॉट आवर टारगेट्स हैव बीन अचीव्ड. ठीक है, हमने डिस्कस किया था. आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा ऊपर. लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि मिनिमम कंजर्वेटिव अप्रोच में our pullback rally should minimum target 16,250. Okay, that target has been achieved. Now last week was very good for obviously our newly launched premium Telegram channel. If you are not a part of it, then definitely I would leave a link in the comment section, pinned comment mein, where you can join our premium channel. Okay, now premium channel is not only advisory calls etc. We also believe in learning. Okay, learning is very important. तो ताकि कल आप खुद इंडिविजुअली एक बहुत ही अच्छे ट्रेडर बन सके मार्केट में. नाउ एज वी नो मार्केट्स हैव बीन वेरी वॉलेटाइल, बट फ्राइडे को वी क्लोज्ड ऑन अ बुलिश नोट. फिर डाउ जोन्स यूएस मार्केट गिरी, थोड़ी बहुत रिकवरी भी हुई मार्केट में. Over the weekend, government has slashed excise duty on petrol and diesel, which is a very positive news. So keeping all these points in mind, ऐसा लग रहा है कि Monday, coming week, in fact, should be positive for us. But क्या हम न्यूज के बेसिस पे हम ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे? नहीं, हम चार्ट के हिसाब से लेंगे, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अपना डिसीजन लेंगे. सो कमिंग फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, निफ्टी के ऊपर देखते हैं. So first things first, what we have, Nifty का weekly chart. Okay, now we have the weekly chart in front of us. अब weekly chart पे हमको क्या दिख रहा है कि हमने इधर एक अच्छा बेस फॉर्मेशन करके इधर से सपोर्ट लेके हमने रिवर्स किया है. Okay, now this is what we are seeing on the weekly chart. Either also we had a good support, okay, which was a resistance before, turned into a support, base बना, इधर से हम रिटर्न आए. इधर हम ऑलरेडी एक बार सपोर्ट ले चुके थे, इधर वापस हमने सपोर्ट लिया है. नाउ व्हाट इज बैड ऑन द वीकली चार्ट इज, अगर आप ये पॉइंट से ये पॉइंट को देखेंगे तो प्राइस इज द सेम. ओके, जहां इधर लो लगा, इधर ऑलमोस्ट वही लो लगा है, या तो ये लो टैप भी नहीं हुआ. ओके, ये जो हमारा लो था 15,671 का ऑन निफ्टी स्पॉट, ये लो इधर टैप भी नहीं हुआ. बट इफ वी सी द RSI, you can see the relative strength of the index has fallen. अगर मैं ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक देखूं तो, which is a negative thing. But this is a weekly chart. Okay, मैं आपको इसका बिल्कुल ऑपोजिट चीज डेली चार्ट पे दिखाऊंगा. दिस इज द वीकली चार्ट. अगर वीकली चार्ट पे हमको RSI नेगेटिव डाइवर्जेंसेस मिल रहे हैं, so eventually in the long run, I believe Nifty will break this level of 15,671 and create a fresh low. But ये immediately होगा नहीं होगा is something to watch out for. अगर ये हुआ 15,671 का हमने इधर लो तोड़ा, we have an immediate support of 15,431 to 513. अगर ये important level टूटा, then directly we will land at around 14,200 के आसपास is our next support. Okay, जो मुझे coming week में तो definitely लग नहीं रहा है. Okay, this is just for our information basis. Now if we see, if we move on the upside, so how much upside can we move? So as per the weekly chart, an important level that will come out for will be this. Okay, that is the first point of resistance, 16,410 के आसपास. Okay, 410 के आसपास में क्या क्यों मैं बोल रहा हूँ, here we had a breakout, ये इधर टाइम स्पेंड किया, वापस आया, वापस इधर ही सपोर्ट लिया, ये वापस गया, इधर एक ब्रेकडाउन अटेम्प्ट किया, बट ये ब्रेकडाउन फेल हो गया, वापस ऊपर गया एंड फाइनली इसको ब्रेक डाउन किया. सो
something that was acting as a support before will now act as a crucial resistance point for us. Okay, if you can see in the previous to previous week also we had taken resistance here, previous week also this was the major resistance for us. So 16,410 is the major resistance. Okay, after that if we see, I will consider the major level coming as, just tell you guys, 16,824. okay, that will be the next major level on the upside. तो ये दो levels हम रख सकते हैं, 16,410, 410 क्रॉस होने के बाद 16,824 as per the weekly chart. ऑलराइट, मैं इसको भी डिलीट करता हूं, देन वी कम डाउन टू द डेली चार्ट. ठीक है, अब डेली चार्ट में हमने क्या किया है, यू कैन सी हम मोर ओवर इधर एक रेंज में थे जिसका हमको ये कैंडल में ब्रेकआउट मिला, वही चीज अभी हम इधर एक रेंज में. ठीक है, वॉलेटाइल मार्केट रहा है. सो आपने देखा होगा वी हैड अ वेरी बुलिश डे, देन वी हैड अ पॉज, देन अचानक से गैप डाउन, देन अगेन वी हैड अ गैप अप. तो इट्स बीइंग वेरी वॉलेटाइल, गैप डाउन गैप अप, गैप डाउन गैप अप, ऐसा सिनेरियो हो रहा है. तो ऐसे सिनेरियो में व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू, बेस्ट थिंग इज टू डू डोंट टेक ओवरनाइट पोजीशंस. ठीक है, मैक्सिमम टाइम लॉस होगा, कभी कभी प्रॉफिट भी होगा, आपको लगेगा अरे यार मैंने प्रॉफिट छोड़ दिया अपना, ऐसे सब मत सोचो. डोंट हैव द फियर ऑफ मिसिंग आउट, इंट्राडे ट्रेडिंग करो, टेंशन फ्री रहो. दैट इज द बेस्ट अप्रोच इन दिस मार्केट अकॉर्डिंग टू मी. नाउ one thing that we are seeing, important thing that we are seeing on the daily chart. Okay, now daily chart mein you can see there is clearly a bullish RSI divergence. देखना opposite है ये, weekly में we had a negative RSI divergence, daily में we have a positive RSI divergence. Okay, now what is this signaling? तो basically ये कैसे हमने किया, अब इधर से आप प्राइस देखेंगे. Okay, ये almost ये बॉटम पे है प्राइस, but the RSI has moved up. ओके, स्ट्रेंथ हैज मूव्ड अप. इनफैक्ट ये जोन का अभी आरएसआई ने ब्रेकआउट भी दे दिया है नीचे. ओके, सो नाउ कमिंग टू द डेली चार्ट. ओके, डेली चार्ट में क्लियर कट व्हाट डू वी हैव. सबसे पहले तो हमको ये जो इधर एक रेंज बना हुआ है, ये रेंज से बाहर आना पड़ेगा. सो उसके लिए 16,400 का लेवल, जो वीकली पे 410 आ रहा था, इधर 404 आ रहा है. 400 बेसिकली 16,400 के ऊपर हमको क्लोजिंग देनी पड़ेगी टू कम आउट ऑफ द रेंज. ओके, नाउ वंस वी कम आउट ऑफ दिस रेंज, वी हैव अ मेजर पर्पस इन द मार्केट इज ऑफ फिलिंग दिस गैप. ये जो इधर गैप हुआ है, ये गैप हम फिल करने जरूर आएंगे अकॉर्डिंग टू मी. तो ये गैप फिल करने आए तो 16,651 will be a major level to look out for on the daily charts. So in the coming week, I feel if the bullish momentum is to continue, तो definitely हम ये gap filling की तरफ जाएंगे. Target will be 16,651. Okay, so that is about Nifty. Now coming to Bank Nifty. तो Bank Nifty में let's see the weekly chart first. Okay, now weekly chart में we have made an inside bar. Okay, clear cut inside bar we have made. Now as soon as this high is broken out, okay, ये previous high अगर हम तोड़ते हैं बैंक निफ्टी में, then definitely I am seeing bank nifty at the previous week high will become the resistance, that is around 36,300. okay, we are at 34,300, 2,000 points का roughly upside gap is still there for us. So 2,000 points तक we can easily निकाल सकते हैं हम बैंक निफ्टी में as per the weekly chart. Now weekly chart में again if you see there is an RSI negative divergence. So from here to here price has moved up, but from here to here RSI has moved down. Okay, so there is an RSI negative bearish divergence on the weekly chart. Now we come to the daily chart. Daily chart में same like Nifty, same setup. We are stuck in a range here. Here also we were stuck in a range, and then we gave the breakdown. Okay, so same thing we are doing here. We are stuck in a range. Now what is the upside of this range? The upper limit of this range according to me would be, यही पकड़ लेते हैं सेफ्टी के लिए, you can say 34,800 आप मान के चलो. We are at 34,300, 34
800 500 पॉइंट्स 525 पॉइंट्स अप्रॉक्स का रेंज का टॉप है. ओके, सो डेफिनेटली इफ वी ओपन गैप अप ऑन मंडे वी वुड बी एट द अपसाइड ऑफ दिस रेंज 34,800 के आसपास. इफ वी गेट अ ब्रेकआउट तो इधर भी एक छोटा गैप पेंडिंग है बैंक निफ्टी में. दैट गैप वुड गिव अस अ टारगेट ऑफ 35,133. ओके, वेरी सिंपल. तो इतने पॉइंट्स तो डेफिनेटली स्कोप है हमारे पास. अगेन डेली पे वी हैव अ पॉजिटिव आरएसआई डाइवर्जेंस. ओके, जिसका ब्रेकआउट हमको बैंक निफ्टी में भी मिला है. सो व्हेनेवर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ आर वर्किंग इन टैंडम, डेली चार्ट पे दोनों पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे रहे हैं बट वीकली चार्ट पे दोनों नेगेटिव डाइवर्जेंस दे रहे हैं. सो व्हाट डज दैट सिग्नल? दैट सिग्नल्स टू अस दैट इन द शॉर्ट time frame, that is daily time frame mein, we will see some kind of pullbacks, some kind of bullish momentum. But the long term picture, okay, if you see the long term picture week on week basis pe, it is still negative, it is not positive. तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि ये इधर एक बॉटम लग चुका है, अभी कुछ भी नहीं हो सकता, नाउ वी विल रीच न्यू हाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. it is possible 16,600 16,800 17,000 max, 17,000 touch करके we may again start our journey on the downward side. Now in this entire pullback, okay, that we see from जैसे हम 15,600 700 से हमने देखा 16,250 तक हमने ट्रैवल किया, जिसका मेन कंट्रीब्यूटर was Reliance Industries. Now in this pullback, who's going to be the main contributor? Okay, so we are going to look at a very important index, which is the IT index. Okay, now IT index जैसे कि आप सब जानते हैं काफी पिट चुका है. ओके, सो इसने अपना इधर एक हाई लगाया था, वो हाई के बाद इधर आया, एक पुल बैक लिया और वापस नीचे. सो इट इज इन अ नेगेटिव स्ट्रक्चर एज ऑफ नाउ. Now let us look at the monthly chart. Okay, this is the bigger picture of what is happening. तो बेसिकली ये हमारे पास एक क्रूशल सपोर्ट जोन था 32,438 का, जिसका इसने अप्रैल महीने में ब्रेकडाउन दे दिया. ब्रेकडाउन देने के बाद ब्रेकडाउन कंटिन्यूएशन टाइप हमको दे रहा है. अब अगर मैं इसको अपने लोज से देखूं, जो उसने मार्च 2020 में लो बनाया था, ठीक है, ये मार्च 2020 के लो से लेके जो उसने हाई बनाया था 39,446 का, इसका पूरा मैंने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया है. अब वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में इफ यू एग्जैक्टली सी, इट इज एट टेकन सपोर्ट एट 38.2%. okay, why I'm saying it's taken support, let me go to the lower time frames, you'll be able to see why it has taken support. So now we go to the weekly chart. Okay, now weekly chart pe you see we had little transaction here, some kind of a support, that support it has found here. Okay, if I go to a even more smaller time frame, daily, so you can see daily pay we have formed a small little inside bar here. Okay, now what does an inside bar typically indicate? An inside bar typically indicates a halt in momentum. Okay, so we have that kind of a pattern here. Now on the daily, if you see, there is this base that was formed here, and now after almost 2 years we have come back to that base. So according to me, IT is very well valued right now. Okay, it is a value pick for us, but we have to see the short term trend कि short term trend कहाँ तक जाने वाला है. So what we'll see is we'll see the latest impulse. ये जो latest fall आया है उसका retracement points हमको कहाँ पे आ रहा है, तो उसका 50% retracement point is roughly coming to 32,503. मैंने ये swing include करके एक level draw किया है 32,438 का. Okay, right now we are at closing has been at around 28,789. Okay, so there is a lot of upside potential here. Immediately short term swing traders के लिए obviously there is this gap, so we will look to fill the gap. 30,000 का level है gap का, so roughly 1,200 points we will have in the IT index to fill the gap. Okay, post filling of the gap 38.2% will be the next target, that is 31,486. उसके बाद 32,503 will be the logical target for us. 50% retracement along with this gap,
तो ये बेसिकली हमारा एक सपोर्ट लेवल था, ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद ये बनेगा अपना रेजिस्टेंस लेवल। ओके, सो ये लेवल तक मैं आईटी स्टॉक्स में एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये पुल बैक के बाद अगेन आई बिलीव द डाउनवर्ड ट्रजेक्टरी कैन कंटिन्यू एंड आवर रियल गुड बेस इन आईटी वुड बी दिस एंटायर बेस दैट वी हैव हियर। ओके, क्योंकि ये एक छोटा बेस था जहाँ पे एक सपोर्ट लेना बनता भी है, बट इन द लॉन्ग रन आई बिलीव दिस विल बी द प्रॉपर बेस फॉर अस, जो हमारा फर्स्ट और सेकंड एक्सटेंशन, ये जो फिबोनाची मैंने ड्रॉ किया है फर्स्ट और सेकंड एक्सटेंशन के बीच में आएगा। सो नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू राइट नाउ, वी विल जस्ट बी प्लेइंग द पुल बैक रैली इन आईटी इंडेक्स। ओके, अब आईटी में वी हैव दी स्टॉक्स विप्रो, इन्फोसिस, एलटीटीएस, टीसीएस, हैप्पी माइंड्स, एचसीएल टेक वगैरह वगैरह। Now the stock that I have picked is Wipro. Okay. Now Wipro, as you know, is a fundamentally sound stock. कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है Wipro। तो पहले देखते हैं ये बड़ा नाम अपने हाई से कितना फॉल किया है, ऑल टाइम हाई से। तो 52 वीक हाई से ये ऑलमोस्ट गिरा है मोटा मोटा 38.48%। ओके, दैट इज 279 पॉइंट्स। 280 पॉइंट आप पकड़ सकते हैं, ये अपने हाई से गिर चुका है, एक फंडामेंटली साउंड स्टॉक। तो ये बार्गेन प्राइस पे अवेलेबल है, उसका तो कोई डाउट ही नहीं है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे इफ यू कैन सी, हियर वी हैड अ गुड बेस। ओके, नाउ अगेन इट हैज कम बैक at this base. Now what is the candle formation it is doing on the weekly chart? Weekly chart पे you can call this a negative candle with a slight small lower shadow, जो indicate करता है कि some kind of support can be formed here depending on कि इसका follow up candle कैसा बनता है। अगर इसका follow up candle एक strong bullish candle बनता है, then definitely it has taken some kind of a support in this zone. Okay, now if we look at the daily chart. Okay, now this is the daily chart. Daily chart में इसने क्या किया है, exactly like the IT index, it has formed an inside bar. What does the inside bar state? Inside bar states the same thing, which is a halt in downward momentum. ठीक है, ये इधर बना है downward channel के, तो it is signaling a halt. अब अगर मैं ये लेटेस्ट इम्पल्स का फिबोनाची ड्रॉ करूं तो मुझे क्या आ रहा है, ठीक है। अब ये पॉइंट हमने देखा, इधर एक सपोर्ट था हम लोग के पास, तो ये अगर मैं कंबाइन करूं एग्जैक्ट टच टू टच 50% रिट्रेसमेंट 529.75. okay, so what are we expecting out of Wipro here? We are expecting that once we get a follow through candle on Monday, if things are positive, Wipro is moving up. जैसे ही प्रीवियस कैंडल का हाई कटा, ओके, दैट इज 473.80 के ऊपर विप्रो ट्रेड होना चालू हो गया, सस्टेन हो रहा है, then definitely I feel we can keep our first target as 510.95 followed by second target of 530. Okay, 530 will be a logical target to chase in Wipro. अब ये कैसे प्ले करना है, आपको इन्वेस्टमेंट बेसिस प्ले करना है, एफएनओ में प्ले करना है, टाइम फ्रेम, ये कितने टाइम में ये टारगेट अचीव होगा, दैट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट. We can only predict eventually it will land at this place. So if you want to play FNO, obviously futures and options में time value plays a very important role. तो अपने risk के हिसाब से आप decision लीजिए. This is our analysis. As usual, my request to everyone would be, please, if you like the video, like button दबाइए, free का है, कोई खर्चा नहीं है like button दबाने में, please कंजूसी मत कीजिए, please like button दबाइए, and please do share and subscribe to our channel. There are a lot of people who come see the videos but they don't subscribe. This really helps us out, so please subscribe to our channel, and also you can join our Telegram premium group. So I'll be posting the link in the pinned comment. You join the group, you get access to our entire YouTube learning library, okay, which is reserved for premium students. It has over 6-7 hours of beautiful content which would help you from right from the beginner stage to the advanced stage and complete the entire technical analysis part for you.
Right, guys? So see you guys tomorrow. All the very best. We'll be in touch on Telegram. Okay, see you guys.